Anti-Brahmin slogans were found written on walls of the Banaras Hindu University in Banaras after the university's vice-chancellor attended an iftar party. These slogans on the walls inside the university were allegedly written by members of the Bhagat Singh Chhatra Morcha. The university has deployed heavy security inside the campus fearing further hooliganism. University Chief Proctor Chandrasekhar has defended the Vice-Chancellor for attending this iftar party. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है दीवालों में इस तरह के किसी जाति विशेष धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। BHU के बहाने देश में अराजकता फैलाने की ये कोशिश की जा रही है। आतंकवादी भी इनको कह सकते हैं। ये आतंक फैलाने की कोशिश है और इसका जो है सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या विश्वविद्यालय प्रशासन को कायदे से निपटना चाहिए ऐसे लोगों से। प्रशासन का एकदम रवैया ढिलमुल है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। प्रशासन की जो है कि मूक दर्शक बना हुआ है BHU प्रशासन। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको NSA के तहत निरुद्ध करके जेल भेजा जाए, नहीं अन्यथा छात्र उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। Well, the storm raised by the Rana couple over Hanuman Chalisa continues. The Mumbai Session Court is likely to hear the bail plea of Amravati MP Navneet Rana and her MLA husband Ravi Rana and the Hanuman Chalisa row today. Mumbai Police is going to submit a reply to the bail application filed by the couple. High Court had earlier dismissed their pleas seeking quashing of FIR against them. The Ranas have been lodged at different jails. Navneet Rana has been sent to Baikula jail. Ravi Rana has been sent to Taloja jail. The couple is also likely to move Supreme Court over the High Court's decision. The lawyer has said that the second FIR filed against the couple is illegal. The public prosecutor alleged the two FIRs are for two different events. Ranas have alleged that the new charges have only been put to ensure that they continue to remain in jail. The fight over loudspeakers is getting noisier by the day. MNS Chief Raj Thackeray has applauded UP Chief Minister Yogi Adityanath for removing loudspeakers from religious places. He has called the Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray a bhogi for not doing what Yogi did in UP. Here's more. The infamous loudspeaker is losing its voice in Uttar Pradesh. Statewide drive to remove unauthorized loudspeakers has seen removal of thousands of the loudspeakers. In other cases, the government has imposed strict sound limit. लगभग 35,000 ऐसे लाउड स्पीकर की ध्वनि कम की गई है और 11,000 करीब लाउड स्पीकर उतारे गए हैं. The crackdown in Uttar Pradesh has won Yogi Adityanath a fan in Raj Thackeray. The MNS leader tweeted that his state unfortunately does not have yogis but only bhogis. A veiled jibe at his estranged cousin and Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. Raj Thackeray has set 3rd of May as the deadline for removing loudspeakers from the mosques, failing which he has threatened to play the Hanuman Chalisa 5 times a day across the state. तुम्हाला जो काही नमाज पढायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची आहे घरामध्ये द्या आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार. Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has lashed out at Raj Thackeray. He says no one will be allowed to instigate communal tensions in the state. अच्छी बात है
जो राज्य के मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं वो लाउड स्पीकर निकालें, सबको साथ में लेकर सबका विश्वास जीतकर अगर लाउड स्पीकर निकल रहे हैं बिल्कुल निकालें। इससे तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक पॉलिटिकल मुद्दा है वो भी खत्म हो जाएगा। The chorus against loudspeaker has angered former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, who says the drive is targeted at the Muslim community, a charge rejected by the BJP. सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों नहीं? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? ये मानसिकता है किसी न किसी बात को लेकर इस प्रकार के बयान देना। पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहां के लाउड स्पीकर धीमे करवाए और वहां के लाउड स्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है। Is the movement against loudspeakers discriminatory or necessary? Whatever the reason, the campaign in the middle of Ramzan has only added to the communal flames. Bureau Report, India Today. The chorus for Uniform Civil Code is growing louder. 5 chief ministers from BJP-ruled states have backed Uniform Civil Code. The clamour for UCC is intensifying, and the All India Muslim Personal Law Board has called the Uniform Civil Code an unconstitutional and anti-minorities move. Is it time then for one India, one law now? Here's more. क्यों नहीं बनेगा हमारे यहाँ सिविल कोड? आएगा, बिल्कुल आएगा, और देश एक कानून से चलेगा। शरिया नहीं चलता है यहाँ पर। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। From Uttar Pradesh to Uttarakhand, the debate on implementation of the Uniform Civil Code has raised hackles once again. In Uttarakhand, Chief Minister Pushkar Singh Dhami has made it very clear no one will be allowed to disrupt peace in the hill state. तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है। चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। In neighboring Uttar Pradesh, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya too said the state is seriously considering implementation of the Uniform Civil Code. एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। In view of the All India Muslim Personal Law Board opposing the implementation of the Uniform Civil Code, Muhsin Raza, senior BJP leader in the state and chairman of the Hajj committee, asked what was the legal standing of the Muslim Personal Law Board to oppose the Uniform Civil Code. He insisted India will run according to the constitution and laws made by lawmakers and not Sharia. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? क्यों नहीं बनेगा हमारे यहाँ सिविल कोड? आएगा, बिल्कुल आएगा, और देश एक कानून से चलेगा। शरिया नहीं चलता है यहाँ पर। The All India Muslim Personal Law Board has opposed the Uniform Civil Code, urging the centre not to implement it in a secular country committed to protecting fundamental and religious rights of minorities. Muslim organizations insist the Uniform Civil Code is not only unconstitutional, they claim it's also discriminatory towards followers of minority religion and practices. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है बिल्कुल जायज़ और वाजिब बात है, और हमने मुसलसल इस बात को कहा है
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। Some legal experts say the time is finally ripe for the implementation of the Uniform Civil Code to bring gender justice and uniform personal laws equal for all. The Law Commission in 2018 concluded that UCC is neither feasible nor desirable in a secular democracy where differences in religious practices are not discrimination. The Narendra Modi government, after having implemented its bold promises on both Article 370 and the Sri Ram Temple at Ayodhya, now is focusing on the Uniform Civil Code ahead of 2024 elections. Bureau Report, India Today. Time now for an India Today Network exclusive. Well, after declining the Congress's offer to join the party, poll strategist Prashant Kishor has spoken to India Today Network. In an exclusive conversation, he's given his reasons for not joining the party. He says that he had doubts about the Empowered Action Group made by the Congress president that deals with political challenges ahead of the 2024 elections. He's also saying that Rahul and Priyanka Gandhi's names were not there in his leadership plan. राहुल जी मीटिंग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से ज़्यादा समय थे। जब बाद में कमेटी बना दी गई सीनियर लीडर्स की, तो उसमें वो नहीं थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी। और ये सहमति जब हम लोग, मुझे दिन एकदम याद नहीं है, जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी उस दिन ये चर्चा हुई थी कि क्या राहुल जी को उस कमेटी में रहना चाहिए या नहीं। ये जी आपने बनाया है? नहीं, ये जी हमने नहीं बनाया। अच्छा। ये जी तो आगे की परिकल्पना है। ये जो कमेटी बनाई गई जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उस कमेटी में राहुल जी रहें या न रहें, ये सर्वसम्मति से उस दिन टेबल पे ऐसा तय हुआ। बनना चाहते थे आप, उसके सदस्य बनकर रहने के लिए तैयार नहीं थे? किस चीज के? जो सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है। नहीं, अभी उन्होंने जो कमेटी बनाने, आप इस बात को पहले गंभीरता से समझिए। एक समाधान, एक उनका जो अभी उनकी जो स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा हुई, उसके लिए समाधान सुझाए गए। उस समाधान पे ये कमेटी ने बैठकर उसका गहन अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी कि भाई ज्यादातर बातें ये जो कह रहे हैं वो की जा सकती है और करें तो उससे फायदा है। एक मिनट, राहुल गांधी को लेकर आपका क्या रुख था? राहुल गांधी को बड़े पोजीशन में रखने के लिए तैयार थे, नहीं थे? आप उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे? तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम कौन है राहुल गांधी को तय करने वाले? आपने 600 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन दिए। बिल्कुल, ये तो आपकी गलत बात है। मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं करता हूँ। मन के विचार के हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, कौन बेहतर लीड कर सकता है कांग्रेस को, या गांधी परिवार के बाहर कोई? जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं थे। मैं इतना आपको बता सकता हूं। आपकी तरफ से जो भी फॉर्मूला दिया गया उसमें ना राहुल गांधी का नाम था, ना उसमें प्रियंका गांधी का नाम था। कौन था? सजेशन जो था वो तो मैं बता नहीं सकता हूं। देखिए, जो बात प्राइवेटली कही गई है उसको पब्लिकली तो नहीं कहा जा सकता है। एक पारस पत्थर की कहानी सबने सुनी है, लेकिन राजनीति में उस पारस पत्थर का पर्याय कहते हैं पीपी नहीं बल्कि पीके है, प्रशांत किशोर। पर इस पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है ये छूता उसी को है जिसमें सोना बनने की संभावना होती है। सोना तो खुद ब खुद बन जाए। कांग्रेस पार्टी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन छोड़ दिया। नहीं, छोड़ नहीं दिया। जो ये उनका डिस्क्रिशन है कि वो मेरी बात सुने न सुने। मुझे जो बात उनको बतानी थी, जितनी उन्होंने सही समझी, वो उस बात को सुना। जैसे उनका ये डिस्क्रिशन है कि वो मेरी बात मानकर मुझे अपने साथ शामिल करें या न करें, वैसे मेरा ये डिस्क्रिशन है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं या न करूं। नहीं, ऐसा आपको ऐसा लगता है, बात ऐसी नहीं है। देखिए, 2 पहलू हैं इस पूरे विषय के। एक कि कांग्रेस पार्टी में 2014 के बाद शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन्होंने अपनी स्थिति और आगे की संभावनाओं और आगे के रास्ते पे चर्चा करी, और उनके जो लीडर्स, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, सब उसमें बैठे। उसमें जहाँ तक मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया है, मैं जो बात हुई वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात तो सही है कि ज़्यादातर बातों में सहमति बनी। आगे के रास्ते क्या होने चाहिए उस पर भी सहमति है। उसको करने के तरीके में
भी जहां तक सवाल है वो खुद से कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए, जहां रहते हैं आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए, उसके बिना पीके का मन नहीं लगता है। वो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों भरोसा करें आप पे? आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा उन्होंने ऑफर किया, मैंने खुद से ही कह दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा। तो पावर की अगर बात यही हुआ था, उनको शक था आप पे? नहीं, शक की बात नहीं है। जो व्यवस्था, देखिए जहां तक जो सुझाव है उस पर उनकी सहमति है, जो करना है उनको उस पर उनकी सहमति है। दो सवाल थे कि उस काम को करने का जो तरीका है, उस काम को जो करना है उसको मेरे साथ करना है या उनको खुद से करना है। कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े लीडर्स हैं, इतनी उनकी क्षमता खुद की है कि उनको किसी पीके की जरूरत नहीं है। वो इस बात को, इन चीज़ों को खुद से कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे से भी पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि साहब बातचीत हो गई और आप समझते हैं कि ये बात करने से कांग्रेस का फायदा है तो आप बेझिझक जाकर आप ये कहें कि राहुल गांधी को हटा के प्रियंका वाड्रा गांधी को ऊपर बिठा दो। ऐसा मैंने कहा नहीं, ये तो आप सूत्र के हवाले से ऐसा चलाते हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। कल अब आप बहला रहे हैं सबको। किसको बहला? यही चाह रहे थे आप। अब आप, मैं चाह रहा था ये जानकारी आपको कैसे है? ये तमाम कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। कमरे में तो आप थे नहीं, कमरे में तो आप थे नहीं। कौन से कई कांग्रेस के जो लीडर हैं, कल पी चिदम्बरम साहब ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि उस पूरे चर्चा में लीडरशिप को लेकर कोई चर्चा उस कमेटी के साथ हुई नहीं। और वो बोल रहे हैं जो G23 बोल रहा था वही चीज प्रशांत किशोर बोल रहे हैं यहाँ पर। कई बातों में समानता हो सकती है। समानता है क्योंकि देखिए वो आप भी अगर बोलेंगी तो कुछ बातें तो एकदम जग जाहिर हैं। खुद दिग्विजय सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ा अच्छा कहा कि भाई हमें तो पहले से पता है ये सारी बातें जो ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया, ये जो भी चर्चा करी, मैंने उनको पहला ही लाइन यही, बल्कि मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत ही एक वीडियो से है जिसमें मैंने उनको ये दिखाया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन में जो कि आपने खुद से पहले नहीं कही है। तो 1980 से लेकर अभी तक जितनी बातें कांग्रेस की लीडरशिप ने कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस में रिफॉर्म के संदर्भ में, कांग्रेस में सुधार के संबंध में जो बातें कही हैं, उसी बात को फिर से मैंने दिखाया। और बिल्कुल जो कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं, अगर किसी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं कह रहे तो मैं उससे सहमत हूँ। Of the major crackdown on drugs in Delhi city, the NCB seized about 50 kilograms of high-quality heroin, arresting one person after it conducted raids in the Shaheen Bagh area. Following the recovery of heroin worth over 100 crores and other narcotic substances worth 30 lakh rupees and cash from a residential flat in Shaheen Bagh, NCB has raised the possibility of narco-terrorism module in this particular area. What we know is that the drugs were kept in backpacks and jute bags and were wrapped in packets of e-commerce major Flipkart and other companies. According to the Narcotics Bureau, an Indo-Afghanistan syndicate based in Delhi and NCR and the neighboring states is connected with this case. These syndicates have expertise in manufacturing and adulterating heroin locally. The India-Afghanistan syndicate smuggles goods to India through maritime as well as land border routes, and heroin is smuggled with legitimate goods and cargo. During the ongoing investigation, it has been revealed that an Indo-Afghan syndicate based in Delhi NCR and other neighboring states seem to be connected in this case. These syndicates have expertise in manufacturing, adulterating heroin locally. These syndicates have been smuggling goods to India through maritime as well as land border route, wherein heroin was smuggled with various other legitimate goods. Heroin was later extracted from those goods by the Indian counterparts with the help of some Afghan nationals. Well, after Ghazipur and Delhi, it was the Bhalswa landfill that caught fire and continues to smolder for the fourth day now in a row. Residents are struggling to breathe as smog and toxic smoke form a dark cloud, posing heavy health hazards to all, including children. The North Delhi Municipal Council is grappling to douse the fire as toxic fumes keep coming out of it. While a political showdown escalates as AAP has attacked the BJP alleging serious criminal negligence. Take a look at this report. Difficulty in breathing, itchy eyes. The fire at Bhalaswa landfill in the national capital has made the life of local population miserable. Toxic smoke is choking the residents. The landfill, which falls under the North Municipal Corporation of Delhi, caught fire on Tuesday evening
and is yet to be brought under control. सबको सांस आंख में लगता है धुआं, ये धुआं सब भरा हुआ है। उधर जुग्गी में जाकर देखिए, उधर से जाकर देखिएगा ना, पूरा भरा हुआ है धुआं। आंख में जलन बहुत, नींद नहीं पड़ना सुतना हराम है, तो नींद नहीं पड़ता है उसमें। The situation is so grave, a school had to shut down physical classes after toxic smog engulfed the building. Fearing health hazards, the school authorities asked the students to stay away from the building till air quality improves. This is not a suitable time to call the children and to make them sit and for the physical mode of, I mean to say. This is a pollution is there, so much of fumes and things like that. So it is better to keep them wherever they are, means at their homes, and when the situation improves, we plan to call them back. The fire gave Aam Aadmi Party a new ammunition to target the BJP, which runs the NDMC. AAP leaders demanded an FIR against the BJP leaders in the NDMC for alleged criminal negligence. पिछले 3 साल से 450 करोड़ रुपए इस कूड़े के पहाड़ सफाई में किया गया है। 1 इंच भी कूड़े का पहाड़ नहीं साफ हुआ। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं साफ हो रहा है? मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर साफ कर देंगे, हमें वोट दो 2017 में। आज 6 साल हो गए और ये कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही चला जा। The Arvind Kejriwal government has slapped a fine of rupees 50 lakhs on the NDMC over Bhalaswa fire. The MCD officials and the fire department officials are continuously working to ensure the fire can be controlled and doused. And the Aam Aadmi Party leaders are asking a pertinent question, that why does the landfill sites like this one catch fire constantly through the year? On the other side, the local residents living around Balswa Dairy are asking that they have a right to breathe and live in a safer environment, which is being threatened by fire incidents like this one. With video journalist Nasir, this is Amit Bhardwaj for India Today from Delhi. Hours of power cuts in the middle of a scorching heat wave. India is facing a big power crisis with Rajasthan, Jammu and Kashmir, West Bengal, Punjab and many other states witnessing frequent blackouts. Here's more. Heat wave sweeps North India. The country is experiencing one of the hottest summers in many years. Temperature has breached 40 degrees Celsius in many cities across India. In the middle of the severe heat wave, India is also facing power shortage. Many parts of Uttar Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir are having blackouts. In villages, these power cuts last as long as 18 hours. In Rajasthan, a patient lost his life, allegedly due to power failure at Kota's Medical College. Her daughter exposed the poor state of the government hospital. बहुत लापरवाही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर की, अगर जनरेटर भी होता तो मेरी माँ नहीं मरती। उन लोगों की कोई सुविधा, डॉक्टर ट्रेनर रखे हुए हैं, इतने बड़ा मेडिकल स्टाफ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, उनमें से ट्रेनर कोई सर्जन कोई फिजिशियन नहीं है वहाँ पर सर। Punjab is on the brink of a blackout as the power generation and availability go down. The state is generating only 3,327 megawatts of power, but the requirement is 5,680 megawatt. Govindwal Sahib plant just has coal stock for 2 days. Talwandi Sabo plant will run out of coal in 5. Rajpura plant has stock that would last for 18 days, but Lehra Mohabbat and Ropar plants have coal stock only for 4 and 7 days respectively. The power minister claims there's no shortage, but PSPCL is resorting to unannounced power cuts up to 10 to 12 hours. सरकार ने फ्री के चक्कर में दे रखा है कि लालच की लाइट देंगे फ्री में। अरे लाइट तो दे नहीं रहे, फ्री क्या दोगे तुम? हमारे बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं 10th के, और रात भर लाइट नहीं आती। सुबह देखो तो पता ही नहीं। आप कम से कम इतना तो बताओ कि इतने बजे लाइट जाएगी, इतने बजे आएगी, आप पानी भर के रख लो मोटर चला के। हमें पता ही नहीं होता कब चली जाती है। रात भर तो हो परेशान, दिन को तो हो परेशान। अब बिजली सस्ती होने का हमें क्या फायदा? The Union Territory of J&K, particularly the Jammu division, is reeling under a major power crisis. Many districts of Jammu are witnessing power cuts for over 12 hours. यहाँ तो बड़ी मुश्किल आ रही है। मैं तो बॉर्डर एरिया की रहने वाली हूँ, आरसपुरा से। मैं वहाँ बिजली नहीं थी, मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके में सिटी में। तो यहाँ भी बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल आ रही है, पखी झोल के गुजारा कर रहे हैं।
The centre and state governments are denying any power shortage. थर्मल पावर प्लांट्स में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। NCP Chief Sharad Pawar expressed concern over the crisis and asked the centre and state governments to find a solution to the problem soon. The question remains, what exactly is the reason for the power crisis? Did the government get its planning wrong ahead of summer? Bureau Report, India Today. Moving on from buying Coca-Cola and adding cocaine in it to making fun of Trump's social media account, it's not even a week since Elon Musk bought Twitter. Now, the Tesla CEO seems to have ample time for some Twitter banter. Here's a report decoding Muskism. Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Trump's Truth Social should be called Trumpet. Cocaine, ice cream, Trump, and tweeting fun on a whim and whipping it up on Twitter. Elon Musk, who just pocketed the social media giant for a cool $44 billion, is on a viral roll. The world's richest man seems to have ample time for some Twitter banter, joking that he's up for buying another global brand, Coca-Cola, to put cocaine back into it, obviously firmly tongue-in-cheek, referring to Coke's original recipe at launch more than a century ago. He may be joking, but with Musk, you can never be sure. Remember, in 2017, he had jokingly asked how much it would cost him to buy out Twitter. 4 years later, we've just seen what happened. Despite all the talk of Donald Trump's return to Twitter under Elon Musk, the world's wealthiest man hasn't stopped having some fun at the expense of the former US president. Musk tweeted saying that Trump's fledgling networking site, Truth Social, has a terrible name and should be called Trumpet instead. The SpaceX CEO had recently also launched at fellow billionaire Bill Gates, taking a deeply personal jibe at his potbelly. Musk has also been harsh on Twitter or its perceived left-leaning management, accusing them of censoring free speech and having extreme antibody reactions towards the right to express oneself. According to his pact with Twitter, Musk cannot tweet anything disparaging against the platform itself. So the eccentric tweets have sparked speculation that Musk may have developed cold feet about actually buying Twitter. Since Tesla's stock prices have been falling over the deal involving megabucks, China too could put a spanner in the works, since Musk's absolutely free speech push may not gel well with the authoritarian Beijing, contributing half of all Tesla vehicle sales. A $44 billion question: is Musk losing interest in the Twitter buyout? Bureau Report, India Today. And staying with Elon Musk, Twitter's legal chief Vijay Gadde, who has been the backbone behind key decisions like suspending Donald Trump's account and also suspending certain controversial articles, has come under fire from Elon Musk. Responding to a tweet by a podcast host, Musk termed Vijay's earlier actions incredibly inappropriate. The tweet led to a wave of abuse against Vijay. Here's more. Twitter's new owner, the world's richest man, is sizing up his new $44 billion toy. He's been promising big changes on freedom of speech and open source algorithms, but he's also sparked his first big storm directly on the company he just bought. It began with this piece in the US media, which claimed that Twitter's legal chief, Vijay Gadde, had broken down and wept in a call with employees after Elon Musk's takeover was complete. Then a popular podcaster posted the piece, taunting Vijay Gadde, which triggered this viral response from, well, Vijay's new boss. Elon Musk fired straight at Vijay Gadde by terming her earlier actions as Twitter's legal head incredibly inappropriate.
Vijaya Gadde is best known as the Twitter executive who pushed for and executed the suspension of Donald Trump's Twitter account last January after the Capitol Hill violence, blocking an article by the New York Post on the son of Joe Biden before the election, and perceived to push a liberal Democrat line on Twitter while shadow banning right-wing views. Exclusively emphasizing the point, Musk tweeted this meme image featuring Vijaya Gadde's infamous appearance on the Joe Rogan show, where she is accused of tying herself up in knots and sidestepping questions on Twitter's liberal bias. Vijaya Gadde has tasted controversy in her native country, India too, when in 2018 she accompanied then Twitter CEO Jack Dorsey, a visit during which this picture of the Twitter boss posing with a smashed Brahminical patriarchy poster triggered an angry storm. Vijaya Gadde is now the target of a huge storm of attacks on Twitter, with Elon Musk being accused of willfully targeting an employee in public and leading to the assumption that the top Twitter executives' days are numbered. What happens next? Perhaps only Elon Musk really knows. Bureau Report, India Today.